then down. So that's the receptacle at the top and the stem going down. Okay, going down there like that. Okay, done. देखू का बाकी एगो बिजनेस तो आदमी करिए रहल बा जेमे कि पूंजी जोन बानू 60 लाख रुपया लागल बा ई मान के चल शेयर वाला सब जुड़ल निकल जाए तो 60 लाख के आसपास रही जल्दी से तो वो आदमी धंधा तो करिए रहल बा जल्दी से एक जनरल बात कर दिया कि तो हमने Okay, now as far as the diagram goes, we're all finished. And we're just going to label all of the structures now. For all of my labels, I'm going to draw them to the side and then connect them upwards with a ruler. Let's choose a different color. I'll go with blue for these labels, and we'll start with the female parts of the flower. I'll label them all together down here. So we'll start with the stigma, which is the part at the top. Below that is the style. Then we've got the ovary. And then the ovules. And we'll connect each of these up. So this part right here, there is my stigma. Now notice this is a mistake I do see people make quite often. Notice that the line connects to the structure that I'm drawing. Some people tend to make it go roughly towards the place that they're labeling. And it's एक अच्छी रौनक दिखाने का काम किया है टेक महिंद्रा ने implies you can sort of see what we're getting at, but here the label line actually connects up to the petals. It's not touching the stigma. 1530 के ऊपर अगर स्टॉक निकलकर कुछ देर टाइम स्पेंड करता है तो फिर डेफिनेटली Also, people sometimes have a tendency to use arrows. Like this, so it doesn't connect to the structure but it points towards it. Again, if it doesn't connect to the structure, then it's not clear what you're labeling and it leaves it quite ambiguous. Make sure that when you do your label line, it connects to the thing that you are labeling. There's actually a distinct connection there. Next we'll do the style, which is that long part all the way down. कितना काम कराउल गेल तो ईटा बालू भाई हो मिस्त्री तो इंडिया खेलने गया. Get a free ball signed by Sky with Bonvita. LinguaMock.ai. AI-powered IELTS prep for the real exam. Practice listening with authentic audio.
reading with full-length academic and general passages, and writing graded on real examiner criteria. But here's what makes it different. In speaking, you respond to your cue card, and the AI transcribes every word as you speak, then asks follow-up questions generated in real time from exactly what you just said. Seconds later, the AI examiner scores you across all 4 criteria: fluency, vocabulary, grammar, and pronunciation. Your recording and every question are saved, so you can review where to improve. Sign up free today at lingomock.ai. Then we'll do the ovary. It's important to try and avoid going through structures as much as you can. Obviously the style has to go through the petals, and it has to go, the label line for style has to go through the petals, and it has to cross over the filament here. It is unavoidable, really, in some cases, but as much as possible try to avoid doing it. Now, next here are the ovules, and I've used plural ovules, and so I'm going to draw the label line to 2 of them. Okay, good. Now, before I go on to labeling any more structures, it's worth highlighting that this part together, the whole thing, the whole female part of the flower, is called the carpel. This is female. Okay, next, since we've done the female part there, let's draw the male parts. Let's label the male parts next. So the top part is called the anther. And the long part that supports it is called the filament. Take out your ruler and connect them. Make sure you connect up to these structures. Okay, and collectively the male part of the flower, the male parts there, collectively make up the stamen. The male part. Okay, I think up top here is a good place to label the petals. There's no really specific place where you have to label one part or the other, of course. Just label it somewhere where you can draw a label line that cuts through as few structures as possible, and as much as possible try to label at the side of the structures, not above or below. Okay, looking good. Now then, I think we've got some space down here. This seems like a good place to label the nectary. में नहीं दिखा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट का ही इंतजार स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है. हमें थोड़ा सा इंतजार करना है स्ट्रक्चर रिजल्ट का, और उसके बाद यदि 1300 के ऊपर ये स्टॉक निकल कर टिकता है तो फिर डेफिनेटली एक बड़ा टर्न अराउंड स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है, जिसमें 1300 थोड़ा जल्दी की चाल के अंदर हमें जाता हुआ दिख जाएगा. बट अभी तक स्ट्रक्चर ऐसा दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं रिजल्ट से पहले थोड़ा इंतजार करना ही बेटर होगा. So there's the
the line to the nectary. बिल्कुल, सो वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रिलायंस पर 1360 1380 तक के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं 1300 के पार जाने पर। बहुत धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ आपका हमसे बात करने के लिए। आइए बारी हो गई है फॉरेन ब्रोकरेज रिपोर्ट जानने की। हमारे साथ है अनुभूति डिटेल्स लेकर। गुड मॉर्निंग अनुभूति, बताइए क्या कह रही है रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग। और ब्रोकरेजेस में हम शुरुआत करेंगे विप्रो के साथ, इसके नतीजे आएगा। और यहाँ पर ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। जेफरीज ने जो है अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट 180 से घटाकर 150 कर दिया है। जेपी मॉर्गन ने टारगेट घटाया है 160 से 155 का टारगेट यहाँ पर दिया है। उसके बाद बोफा, इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट जो है वो 210 से घटाकर 184 पे यहाँ पर दिया है। इसके बाद हम देखें तो यूबीएस ने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट कट किया है 215 से 200 का टारगेट दिया है। और नोमुरा ने टारगेट कट किया है 190 से 200 के लिए। गोल्डमैन सैक्स ने जो है सेल की रेटिंग बरकरार रखते हुए 172 का टारगेट दिया है 179 से घटाकर। और सिटी ने यहाँ पर टारगेट अपना घटाया है 160 से 150 के लिए। इसके बाद हम देखें तो टेक महिंद्रा पे कई सारी रिपोर्ट्स हैं। जेफरीज ने जो है अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट बढ़ा दिया है 1225 से बढ़ाकर अब टारगेट 1260 का किया है। जेपी मॉर्गन ने और टारगेट जो है वो 1750 से घटाकर 1700 का किया है। इसके बाद इन्होंने अंडरवेट की रेटिंग है बरकरार रखी है और टारगेट बढ़ाया है 1160 से 1270 का टारगेट किया है। नोमुरा ने अपनी जो रेटिंग है न्यूट्रल की बरकरार रखते हुए 1410 से टारगेट बढ़ाकर 1600 का कर दिया है। सीएलएसए ने एक्यूमुलेट की रेटिंग बरकरार रखी है और 1560 से बढ़ाकर टारगेट दिया है 1634 का। इसके बाद गोल्डमैन सैक्स ने जो है सेल की रेटिंग बरकरार रखते हुए 1400 से 1420 का टारगेट बढ़ा दिया है। और सिटी ने बिकवाली की राय बरकरार रखी है पर टारगेट जो है वो 1220 से बढ़ाकर 1345 का कर दिया है। पॉलीकेयर बिक्री के नतीजे आए थे बाजार में ही और जेफरीज ने यहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है, टारगेट बढ़ा दिया है 10,920 खरीदारी की राय बरकरार रखी है। और 9500 से जो है वो टारगेट अब बढ़ाकर 10,160 का किया है। सिटी ने जो है खरीदारी की राय बरकरार रखी है, टारगेट जो है 10,500 से बढ़ाकर 10,900 का किया है। गोल्डमैन सैक्स ने जो है टारगेट 8730 से बढ़ाकर अब 8920 का कर दिया है। इसके बाद 361 वाम, यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है, टारगेट बढ़ाया है 1300 से 1340 का टारगेट है। सिटी ने जो है वो 1600 का टारगेट दिया है, यहाँ पर पहले 1525 का टारगेट था। इसके बाद बीएचईएल, यहाँ पर मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है इस पर। This video covers the structures found in insect-pollinated flowers and the functions of each of those structures. There's a lot of vocabulary to take in this video, and you might find it useful to fill in this notes sheet as you go along. The link to the sheet is in the description. Also, just before we dive into the structure of the flower, if you want to learn how to do your own biological... Most flowers have both male and female parts, and this part here is the stamen, the male part of the flower. You can see 4 stamens on this diagram. At the top of each stamen is the anther. The function of the anther is to produce pollen, which contains the male gamete, the male reproductive cell. This long, thin structure is called the filament, and it supports the anther. This central structure is called the carpel, and this is the female part. At the top of the carpel is the stigma. This is a sticky structure that pollen attaches to. At the bottom of the carpel, this large structure is the ovary. The ovary produces the female gametes within the ovules, and the ovary will later develop into the fruit. Those ovules I mentioned are found here inside the ovary. You can see 6 ovules in this diagram. It's within the ovule that the female gamete is found. The ovules will go on to form seeds. This long structure is called the style, and its job is to support the stigma and to connect the stigma to the ovary. There are a few other parts that are relevant. There's the stem, which supports the flower and raises it to an elevated position, making the flowers more accessible to insects. The receptacle is an enlarged part of the stem which connects the stem to the flower and supports the weight of the flower.
Lastly, the sepals. These are there to protect the flower bud before the flower blooms, and they help support the petals after the flower has bloomed. आप यहाँ बैठकर ये खा रहे थे जब आपने उसको वहां देखा था, करेक्ट? नहीं सर, वो इतना चॉकलेटी और क्रिस्पी नहीं था। I knew it. ज्यादा चॉकलेटी, ज्यादा क्रिस्पी, नया कैडबरी बग। राउर बच्चा लोग दाल भात खा के बड़भइल हुई हैं। हमनी के तो बतासा और बालूशाही खा के बड़भइल बाड़न। रउआ कबो कैविटीज के चिंता ना होला? ना होला। मिठाई के ई व्यापार में पीढ़ी दर पीढ़ी कोलगेट हमनी करत आ रहल बानी, तो अब चिंता ना होला। कोलगेट संभाल ली ही।